Yes, yes, you're perfectly audible. Please Okay, go ahead. great. Thanks, Rima. And it's great to be on the same platform along with सुशील जी. थैंक यू सो मच. मेरा ये मानना है कि मतलब पिछले 2 महीने से फ्रॉम 16th जून onwards the market has been going up and up and up, and it feels like every moment you feel that the market is going to go down, it goes another 200 300 points up on nifty. And now, when all the news has been factored in, there is no news to react to. The market is going nowhere. So I feel that I mean, uh, is it something which is happening below, like a big iceberg, that we are only seeing the tip, or is it everything is over and the market is just sitting and relaxing and it has no further activity to do, which is like very 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 unusual thing which happens. And people are short, people are long. FIDIs are changing their position drastically every 2 days, 3 days, and it's going nowhere. I mean, is this the characteristics of a market or a typical market, or is this something which we feel that will continue for another 3 more months? This is my like short question slash observation for the panel, and if anybody would like to take it up and respond, I'll be more than happy to hear. Uh, Thank you so much for giving me the chance. Cora, what's your take on how to survive and thrive in these violent markets? Cora, I hope you're not looking for the ice cubes. It's only 8 o'clock. So, Lataji, He's what's not your. around, I guess. Yeah, so he logs in into spaces and then he gets on other phone calls. So, Lataji, let's hear her. I don't really have any, input to give you on this. I'm not an expert. I'm an No, amateur. nobody is an expert, पर You आपकी know, जो भी इस वक्त फील है, जो भी questions है, ideas हैं, thoughts है, worries है, let's hear you. uh, Nobody okay, is an expert. Some people tout themselves to be an expert. बाजार सबसे बड़ा expert है. that's true. Mr. Market is always right, right? Yes, Mr. Okay, India and Mr. Market. yeah. My thing is, it's like a ship that's going through a stormy sea. And, it's going, there's a rolling and there's a pitching constantly, and the waves are hitting the ship. And the best way to be in the ship is to have both your feet wide apart so that you can stabilize yourself. And, don't try to do too much of moving around either by the waves or by the ship. My sense is that whatever stocks you have, if you've done your proper research and you've done your proper study of the market and of the stock, uh, best way is to stay put with what you have chosen, and don't try to risk it, because you could get hurt on either side. Because one, as somebody just observed, it's the FIs yesterday, I think, sold some just they just had some 8 crores or something, and they, the DI is also sold, and I think everybody's trying to figure out. In that scenario, I'd say, stay put. Whatever, that's my feeling. What I'm doing is I stay put, and if I'm over invested in something, maybe I would like to go a little light on that, so that I can protect myself. That's the way I kind of see it, like a ship that's going through stormy seas. But on the whole, I feel the market is headed upwards, and long-term investments may be a good idea. That's the way I see it. Nice to hear from you, Lataji. So, yeah, interesting thoughts indeed. Um, okay, hold on. Yeah, I would love to have anybody's inputs on this, because that's the kind of metaphor that came to my mind. But of course, I'd love to learn if there is another strategy that would work better. I'd love to learn that. We
See, Lataji, what you are talking about is quintessential truth. The long-term drift of equity markets, continuous population growth, and reinvestment of profits, the surplus into growth that some good companies do. Yeah. So those who can resist the temptation to keep doing things and they live a measured life and are regular long-term investors. So there's in the stock market there's a never a bad time to be investing if you are doing it in reasonable chunks and pieces and you're spreading it out. So with that, it's a different thing. But the focus, because a lot of people do follow us for our short-term work, the way dollar index has gone into a new high, crude after having come down to a point which at 120.25 when we spoke about 86 getting feasible, we were mocked at on Twitter again. We keep getting mocked at, and that gives us more confidence. Yeah. So that having been done, and now crude made a rally, and again last 2 3 days it's just trying to make a double bottom. Maybe whether crude will flare up or not, whether this dollar index is really ominous, whether this breakout in VIX, the US VIX I'm talking about. Yeah. Some people will keep defining by the textbook that volatility, the best prediction of tomorrow's volatility is today's volatility. That's a theoretical model. The VIX or implied volatility is the price people are willing to bet for level of uncertainties to rise or fall. So uncertainty by definition cannot be defined certainly. So all the intellectuals will get something to argue with and fight with. वो अपनी कहानी है, but VIX is looking ominous. At the same time, the S&P 500 made this 10% odd correction, and Nasdaq skidded even lower. Nasdaq has kind of broken certain more patterns, but Yeah. India घटा ही नहीं. India has become wildly volatile. The uptrend is gone, downtrend is not in place, Mm. and the US interest rates flared up to even a further new high. So the scenario is one where things are not exactly as well related as they were, and this picture is apart from the opinions. See, a lot of newspapers are now views papers. Yes. Too much of ego, because Mm. that visibility creates ego, and some journalists think they have been appointed by God to educate the society or to have an opinion in everything. जैसे कुछ जजेस रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपना कोट बिछा लेते हैं कि कोर्ट यहीं लगेगी और अभी फरमान जारी होगा. तो ज्ञान बहुत बगाड़ते हैं बहुत से जर्नलिस्ट. एडिटर बनने में भी 15 साल बाकी है, बट सबको प्रीतिश नंदी की इमेज में शैडो में जीने की आदत है. So most, and then there's propaganda, there is agenda, there is paid news. So newspaper opinions, social media opinions, marketmen's sentiments and perceptions is one thing. All fundamental analysis people over push it. Fundamental analysis में क्या है? Everybody has a freedom to talk of value. Everybody has a value. Somebody's value system does not permit to have hard liquor. Beer is fine, and for some people even beer is ram. And then again, for some people, even having aerated water is very very bad for health. So each person has a value, and one can keep on arguing about it. So that is a problem with fundamentals. So market driven data where indeed VIX has risen and is looking like after a consolidation it's out of that consolidation range. Dollar index has indeed hit a new high. Are these reversing from here? Dollar index ghat jayega. Why is VIX going higher? So perhaps if Cora takes up the mic now, he trades quite a large capital in global markets. He acts innocent on Twitter, picking up a fight with every teenager. Maybe that's his idea of how to stay young, but he trades serious capital across global markets. कोरा तू बोलेगा या अभी मैं फोन करूं तेरे को? What a charade, yaar. I mean, you blocked one mic and you don't talk. So, in that sense, Lataji, the idea is अगला एक महीना. Long run में either we will be dead or stock markets will perform. If we don't move in and move out, अच्छे stocks पकड़ के बैठ जाइए. बुढ़ापा definitely बढ़िया कटेगा, क्योंकि stock market से better return और कहीं नहीं आ सकती, for three simple reasons. There's continuous growth of population, so there will be an increasing scarcity of valuable compounding assets. And then companies that make a surplus profit over and above what they distribute, they recycle it back into growth.
So long as companies have a growth curve ahead, their investors will keep making money. Like Hindustan Lever, a great company for 7 years, it did not have a growth curve. Stock price languished. So any companies that have a growth outlook, those portfolios will keep growing. So that's not the true question here today. So let's hear Sunilji, and then we go to Niveshak. Thanks, Sushil bhai. For me, being a learner, I'll say कि FI buying आपको बेचने नहीं देगी और मार्केट जो चल रहा है वो आपको खरीदने नहीं देगा. Frankly, 2 days back I cut out मैं अपनी सारी positions बेच चुका and जो long term investments है that's only I'm holding. FI buying, looking at that, I'm not able to sell. मतलब I'm not able to short the market. Thinking कि because in the last 10-15 years of my trading journey and investment journey, what I have learned, I never go against the FIs. If they are buying, either buy or stay aside. US market देख के लगता है market up गिरेगा, but it's not falling. The day it fell about 300-400 points in the open, it was bought like hell, and the next day we went like anything. तो हाँ, सुशील भाई को ज़्यादा पता है, मतलब he is a big master of the thing, but as a learner मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसमें मार्केट किस तरफ जा रही है. So apart from the मेरे को भी नहीं investments, समझ में आ रहा है, इसीलिए स्पेस किया है. so apart from the stocks which I've invested for a longer horizon, I'm fine. Else तो अपन IT से full to out, IT में बिल्कुल कुछ नहीं लगा है. IT will fall down 200% today, tomorrow. There are some stocks in IT which I'm waiting to come at a good price. I'll buy it. बाकी बैंक, the India is growing long term, 10 years, 15 years horizon. It's different story altogether. But आजकल वो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि विप्रो में किसी ने 40 साल इन्वेस्ट किया और इतना बन गया. आज का विप्रो बताओ ना यार कोई. who मतलब I don't know much people who stay putted in their stocks in 2008 crash, then corona. कितने लोग होंगे, मतलब I hardly know people who stayed invested in Wipro for last 40 years. So फॉर मी एज ऑफ नाउ, और शायद आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत इम्पेशेंट है. उनका लॉन्ग टर्म भी 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने होता है. 40 years is a long time. We want our investments to double, triple, or whatever in 6 months horizon. Yeah, that's a fair point, Sunil. So what's your thesis on how to survive and thrive in the next 1 month? अभी तो मतलब for me either Staying out buy, is the best thing, according to you? staying out for me, I'll wait for the market to stabilize, give a direction, because it's not going up, that's for sure, but Sure. it's not coming So down we come also. back to you, Sunil. Kora has Yeah, unmuted his mic. Let's thanks hope bhai. it's not an accident and he actually wants to speak. Go ahead, Mr. Reddy. Yeah. Yeah, I mean, for me, the Indian markets are headed to all-time high. It's a question of when, perhaps by December or before that. And how much of downside to suffer before that? I don't think there would be any downside from here. What is the reason for such thinking? So the IT and pharma are going to take the index upside now. The pharma component in Nifty is very low, with only Dr. Reddy's and one more stock. But the IT is going to pull the index up. IT is the contrarian bid for the next year. Perhaps a 30% on the index level from here. Hmm. Any And sectors you see going down right now? auto is peaking out. It's So if already we have, peaked out, I guess. yeah, I mean, I would It's somehow hanging on the edge of a precipice. correct. Auto is, I would be, if I have an investment in auto, I would like try to get out. If there is a tax event, probably get out by year end. Uh, and then US market, perhaps two more lower lows, and then
If Lower November, lower lows of last week, or you're talking of yes, last 20 uh, days or last 1 month? the last few daily bars. So you expect a lower low. Yeah, the So lower if lows. Monday does not make a lower low and actually makes a big up day, then what does Mm. your statistics say? Monday, it's a thin traded session, so I wouldn't venture into Monday's Why is it read. thinly traded? US is having holiday. Yeah, the labor. So it's only open 100% कमाना होना है फिर market में. Monday they will Globex is yank it up to make it look like an up day, and they'll butcher all the shorts in Asia. so there are like couple of lower lows on US, and then the election event, which is in November. If Congress party is What is the going to come, election then event in November? the midterm elections. Hmm. I would guess the Biden is going to lose, and the Trump guys are going to get majority, upper house or whatever you call there, and that's a bullish event. Once you have a mixture, right now it's dominated by the Biden's party. Once you get a mixture of both the parties, it is very bullish event. So any hiccups are opportunities from here till November. From November, it is going to be a one-way rally from in US. I don't know whether we're going to reach new all-time high, but it is a one-way move from mid-November onwards. All that you need to survive is from now to. So until November is a long time. You have September and October. How much of an upside or downside between the next 2 months? So there is another statistic for you in the October, November, December. Yeah. So the September straddle price, whatever is the Nifty, that is going to be the range for Nifty. September straddle price. Yeah, that would be about 800 points. Uh, Which straddle? Which strikes? There are too the many Nifty, straddles which you can construct. Nifty at the money straddle. So that was around 17,800 or 700 is what the close was on last expiry. Hmm. So whole month you think the range will not be more No, than not that? whole month, whole quarter. Why? Why do you think so? The Nifty straddle is always in the money. Short straddle is always in the money in the fourth quarters in Indian market since 2008. Mm-hmm. So uh, that's another input for you. Even if any guy is looking at a downside, cannot go below. So you expect that whole of the next quarter, Yeah, the Nifty will just keep on vacillating in a 700-800 point range. correct. So What is the upside chance would be. that this may be just a spurious correlation unless and until we find a good reason for it? I don't know. So basically, some of these fourth quarter results are going to be little bad, but they're not going to be exuberant in India at least, because the fourth quarter, which is actually second quarter for us, right, is not so something which corporates worry about. Whereas in US, they worry about and they push the prices up because they have to make bonus in the fourth quarter, if at all they have to do. In India, it is not so important quarter, so they don't take it seriously, neither very enthusiastically. That may be one of the reasons coming from earnings. Um, yeah, except I mean, I don't see it. Might be a spurious correlation, but yeah, if you ask me the reason, I would say from corporate events point of view, that would be one. And the IT stocks, which I'm bullish, but there won't be new projects which are signed up. So it won't fall, it won't move up in this quarter. Interesting thinking, Cora. It has about 30 percentage weightage. So if at all you have to hedge whatever your core bullish positions, you short HDFC at 20% exposure. So 100 long and 20% short in HDFC and HDFC Bank 10-10. You will survive. So what's your thinking on this dollar index going into a new high?
The Japanese yen, probably a 1997 kind of event is on the horizon, so they have to defend. Uh, Sorry. Please explain this more. there was a devaluation or something like that in 1980s or 1990s in Japan. Overnight, uh, the Japan market rallied about 8 or 10% from Japan's then RBI, I mean Japanese bank governor or whatever. A Bank of similar, Japan. yeah, Bank of Japan. So a similar event is around the corner after this G20 meeting. So my thinking there But the is, but the dollar yen chart is showing that dollar is topped out heavily against the yen. I think a one-way slide in the value of dollar against the yen should come. Whole market is positioned towards anticipating such an event, but the chart is screaming something else to me. yeah, I mean, can it go lower? Maybe yes, but from here I would be a buyer of yen and I would short dollar. Right. So you are also Uh, expecting, but you are also expecting that yen will get devalued. So why would you show? Why would you? Oh, right. So you're expecting yen to get devalued and dollar to. No. You are expecting yen to devalue, which means dollar will go up, right? This chart is USD JPY, not JPY USD. But the chart is screaming that dollar will go down and yen will go stronger. yeah, that's what my thinking. So the event would be from a BOG governor and it would be in November, the G20 meeting. So all So that. before that November thing, if this goddamn thing corrects by 10%, so right now let's Uh, focus on the next 1 month. No, what's your take on the September so month? the November is 1.5 month away, right? The G20 meeting in Bali. November is 2 months away. Let's survive. Let's survive September. How do you react to this statistic that Yale Hirsch used to publish earlier? Yeah. Traders Almanac. September is usually the low of the year. Yeah. Yes. So that in S&P, it's just like 100, 150 points away now. If you look at 39 and the June low is 36 odd or 37 odd. Whether it gets tested or not, your downside is only 100 points, but the upside is anywhere between 15% from here, 12 to 15%, or 10 to 15%. That So would be like next, my 600 worry point is rally. next week. Am I looking next week for a 3-4% rally on equities while dollar index makes a sudden jump downwards? Perhaps S&P is, I am cleans out positioned all the with, shorts on the stock market, and then dollar ricochets back up into a serious new high, sending the stock market into a tailspin after next week's 3-4% bear squeeze. That's the thesis I'm working with. Stock markets will create a 3 to 4% bear squeeze next week. Everybody will start tom-tomming, "Kahan hai mandi, kahan hai mandi?" Sab chart is bekoof hai, and then market will go into a tailspin totally. yeah, that might be a possible scenario into the Fed meeting. But the next week I am bullish, and the week after is what your Fed event is. So So next week the bear squeeze comes, and thereafter suddenly markets start going into a tailspin because Uncle Fed will do tamasha. So up next week, down the week after that, right? correct. And if at all any 3,700 or 600 opportunity comes, this is a takeout the Keynes kind of moment on S&P. How do you read this volatility jump? It's not much actually. So it's the VIX right now anyway is about 24. Uh, uh, 24 trading 20 into 24 levels of VIX is not a big deal. It's not a high volatility. No, it was at 19 just about 10 sessions ago. It closed at 25 and a half on Friday after Uh, showing us 28. yes, I mean that's not a big serious reading. The serious big reading is above 50. No, above 50 is calamity has already happened. Correct. Up, So right when now, when it would be when it would be above 50, disaster would have already happened. but right now, do you want me So to the buy worry VIX? is worry is No. are we headed from this 25 and a half to 35, or are we headed back towards 20? No, maybe oscillate here because of the elections. Right now, the I VIX. I I am personally betting on
VIX getting from 25 to about 35 over the next 3 weeks odd. And that would mean after the jump in stocks next week, a fake rally, so to say, a soothing rally, so to say, a romantic rebound, so to say, reality will be presented by Uncle Fed next week. And way before Uncle Fed gets up to talk, maybe by Friday itself of next week, sudden reversal comes. Monday, Tuesday, we are slammed. A short squeeze again happens with Uncle Fed trying to do some soothing. That's the map ahead right now for me. It keeps on getting changed and updated with price behavior. But I'm personally betting on the idea long vol strategies will make money. Trying to sell volatility will kill all of these penny traders. ये जितना Yeah, गुरु लोग the ये way that जितना गुरु you लोग can हैं who are picking up free lunch selling volatility, they will be taken to cleaners. the way that you can exploit is sell the current week straddle and buy uh, uh, ratio spread 1:2 a month and or 4 weeks out as option. So if you are not sure about the direction, short straddle this week and buy a triangle, a couple of them the month end ones or 4 weeks out, either in Nifty or Bank Nifty. So who else is happy to share their thoughts? Ghanshyam Rai ji is here. Let's add him as a speaker. And Gaurav, let's add him as a speaker. Thanks, Gaurav, for your inputs. Thanks, Sushil. Talking to you. And then Karthikeyan wants to talk. Let's add him as a speaker. We are 8:30 now. Maybe we can wind up by 9 o'clock. So whom do you want to invite next, Rima? Maybe Ghanshyam and then Gaurav. Go ahead, Ghanshyam ji, unmute your mic and talk. Rima, can I ask Mr. Reddy a question? Yeah. You mentioned that you're positive on the IT sector. Yes. A speaker before you mentioned that IT is definitely 100% going to go down. So I was just a little confused about No, how. I'm not saying it will go down. No, I you're not said, saying it. I know you're not saying it. The other speaker said that. You uh, said it's going to go positive. It's going to go up. So I yeah. was just interested in your, finding out how you analyze the IT sector. Basically, it's a theory called reversal of the fortunes. So the worst sectors are outperformers the next year. Okay, This okay. year, the IT sector is the outperformer, worst performing sector. So if you look at last year, the last top bottom five worst performers are auto and banks. And this year, the auto is the number one sector, and banks are so and so. And Like popular thing. It's like a rotation. yeah, so the reversal of fortune kind of stuff. Okay, okay. Thanks. It's more of a contrarian thinking rather than going with the crowd. So unmute your mic, Ghanshyam. Go ahead and share your thoughts. And then we'll like to hear Gaurav. So, thank you, sir. Sorry, I pressed mute all by mistake. Kindly unmute yourselves, Ghanshyam, and please talk. Yeah, so now can you hear me? Yes, we can. Thank you. Thanks for giving this opportunity. So, see, I will go with my view. If short term, if I talk, then next week probably we are going to have some bottom, and also in correlation with US. So we will have some bottom, but for next upcoming till Fed event, I think there would be again there would be selling. And also it will depend upon the psychology of that how much everyone is in cash. It can be FII also because they are in cash, and considering India market is in better position in terms of geopolitics, in terms of equity market also, but valuation wise, of course, we are at par. So that also has to be considered. But once FII decides to put money into some market, they do not see for the levels.
They only go for like, yes, we have to put the money in some markets. It can be emerging markets, and of course, in emerging markets, we are at better level in terms of all other markets. So that can be one scenario that we have to see, that how FIIs are coming with the money, because they will impact the levels and the market levels, of course. And if they are in cash, then of course they are going to put into if situation will improve globally. So that's the one scenario. Second point, like Reddy sir was talking about, in November we may have some good news, but the good news can be the selling point also. So it's like, see, we can make some high around that point, maybe end of October or the exact 8 to 10 November. We would make some high, and then after that, there will be lot of selling. So that's my view, considering the psychology and everything. So that's how I will go. Wonderful thoughts. So let's hear Gaurav then. Gaurav, please unmute your mic and share your thoughts. Gaurav Jain. Maybe he's not around. Gaurav, can you hear us? Will you unmute your mic and like to talk and share your thoughts? I think he's perhaps busy or something. So I'll try and do a wrap up. Okay, see, this daily trading and definitely intraday trading is not the cup of mere mortals. Too many people are trying it to try and rotate their capital faster, and that's a surefire way of landing into the poor house, the butcher's colony. But still, people are trying it. But yes, there are tradable opportunities within that. Usually, this day trading approach and taking a 2-3 day approach is the killer. But right now, markets are full of noise on longer term horizon, on medium term horizon. So those amongst us who are traders, instead of taking any massive views, if you keep picking up the nickels the market is offering, it's fine. The danger here, of course, is when there is no continuous ho hum, gung ho atmosphere. The tendency is that we start thinking there's a large killing to be made on the short side, and it might materialize also. You can't rule it out. But I have a genetic hesitation, so to say, in having everyone trying to do a short, even if the market goes down. Market means Nifty. For the simple reason, this world has been having too prolonged a war, and that's an idiosyncratic event that any day some good news can erupt from that side. On the other hand, people are kept scared that China may emulate the endeavors of Russia. So geopolitics is a mixed bag. It's like the trump card. It's a free paplu you're given the casino owner in the game of Rummy. वो कभी भी पपलू डाल के सबका पत्ता पैक कर देगा. So you can't sit on a short as the strategy even if markets end up going down 10% on Nifty. 17,500 का 15,700 800 पकड़ लो, even 15,000 also टूट जाए. So we need to find what we've done for ourselves, and those who listen to us pay us for our research and advice, that identify stocks that have been laggards in their market performance and have acquired a relative value attraction price wise. So say if an L&T was a laggard, great company laggard, कोई ले नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, and L&T has been keeping on giving stupendous returns. This is the market where you have to rotate out of strength and pick up weakness at the right time. When weakness is overdone, so technicals would work on that. So these may be some sectors or these may be individual stocks. Like say 2 months I kept on saying टायर स्टॉक्स 3-4 महीने से 900 का सी एट 1700 हो जाएगा. सो नेचर ऑफ फोरकास्टिंग बाय डेफिनेशन इज यू हैव टू plan an idea ahead of its time, but you have to execute it only when its time has come and the reversal comes. So say like cement, auto ancillaries that were laggards for us, they've made a very smart move, but I think the excess in them is far not yet done. Some correction, they will again become worth buying. Pharma stocks I'll concur with Cora, but not an across the board pharma bull market.
Maybe a Biocon is ready for some very smart moves upwards, and Dr. Reddy's and Sun Pharma will keep making noise. Maybe a Lupin will do that. So time to time, pharma is not a sector to sell. इसमें बेच के कहीं धोखा हो जाएगा, शॉर्ट करके धोखा हो जाएगा. Cement is not a sector to short. Auto ancillaries are not a place to short. Even oil and gas stocks, except for Reliance, is not a short. Reliance नीचे 2350, ऊपर 2700 का रेंज है. If in case it comes down to 2350, if I have a spare house to sell and bet it on Reliance, I'll do that. मेरे को लगता है 2350 के नीचे जाए बिना Reliance will take this market to serious new highs. ये 20,000 का निफ्टी Reliance करेगा by going above 3000. But before it does that, and the elephantine stock it is 2300-2400 आए तो nibbling start करने का. जब full fledged reversal आ गया, half the position taken. Once it comes back and breaks out above 2700, उसके बाद पागल तेजी करना है 3200-3300 के लिए. That's the sequence in Reliance over the next 1 to 2 quarters. Lever, ITC, all other FMCGs seriously overbought. लोग हंस रहे थे हमारे पे जब 3 महीने पहले वो आटे का भाव बढ़ जाएगा, गेहूं की शॉर्टेज हो गई है तो ब्रिटानिया बेच दो और एफएमसीजी बेच दो. खतरे के समय में when unmanageable inflation is around, when inflation is shooting far past expectations or anticipations or even our responsiveness, the only set of companies in the world that will gain out of inflation is, अब जिसको सवेरे चाय में पार्ले जी का बिस्किट डुबो के खाना है, some worker who goes to factory और वो रास्ते में उसका ब्रेकफास्ट इतना ही है, वो कटिंग चाय के अंदर में 4 बिस्किट डुबो के खाएगा तो पार्ले जी के ही बिस्कुट डुबो के खाएगा. वो ये नहीं बोलेगा मुझे खाली चाय पिला दो. सो फ्रॉम अ लेबरर राइट अप टू फैंसी हाउस होल्ड जहाँ बच्चों को जो भी बिस्किट खाने वो खाएंगे ही. सो दीज आर relatively price inelastic products, FMCGs, brands, customer loyalties, habit stocks. Always buy them when the world is going through a macro tumult, when the world is going through unmanageable inflation. क्योंकि बाकी कंपनियों को unmanageable inflation में बैंड बच जाएगी. Cyclicals, commodity driven businesses, no brand value, replaceable products, or where demand can be postponed. गाड़ी 6 महीने रुक के खरीदेंगे, घर 1 साल रुक के खरीदेंगे. सडनली इंटरेस्ट रेट्स शूट अप हो गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो ईएमआई एक साथ बढ़ जाएगी. भाड़े का घर एक बार ले लो, घर बाद में खरीदेंगे. दैट्स व्हाट द यंग प्रोफेशनल हुज बीन लिविंग इन अ भाड़े का घर. अब शादी होके 4 साल हो गए हैं, जॉब करते 7 साल हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर चाइल्ड प्लान किया है, यार हो जाएगा बच्चा भी, कोई बात नहीं, एक बार भाड़े का घर ले लो. दैट्स व्हाट बॉम्बे's रियल एस्टेट मार्केट witnessed in last 3 months. Serious shoot up in the value of EMIs because bond portfolios crashed. 30% फ्लैट का पेमेंट करने के लिए जो बॉन्ड्स में सेविंग कर रखा है वो 30% गिर गया और तो रिक्वायर्ड फंडिंग हैज गॉन अप बाय 10% मोर, 12% मोर. 70% को फाइनेंस कराने वाला था, 80 को कराना पड़ेगा. तो 1/7 इज 14.28%. 14.5%, 14.25% और पैसा लेना है तो ईएमआई 14.25% वो बढ़ गई और 6.25% की ईएमआई बढ़ के 9.5% हो गई. तो ईएमआई तो 50% बढ़ गई. बोले रुक जाओ यार. So those kind of sectors where inflation and interest rates will make a dent. Cars, 85% of them get sold on financing. So interest rate sensitives will suffer. ऑटो में बंचिंग अप इफेक्ट था, चिप नहीं है, ऑटो को ओवरसोल्ड कर दिया. उस टाइम चिप आएगी, गाड़ी का अंदर में फिट होना चालू होगी, उसके बाद स्टॉक खरीदोगे हैं. मतलब घर में मेहमान आने वाला है तो आपको अपने कुक को बोल करके पहले से अपना मेन्यू रेडी कराना पड़ेगा. उसको जो भी इंग्रेडिएंट्स कुछ शॉर्ट है भाई जाके ले आ, शाम को मेहमान आ रहे हैं, 7 बजे तक तेरा खाना रेडी हो जाए. आने के बाद 8 बजे गरम नान बना देना और बाकी खाना गरम लगा देना. लाइफ में सब कुछ पहले से करना पड़ता है. तो मतलब चिप आ जाएगी, उसके बाद गाड़ी जब फैक्ट्री से बाहर निकलने लगेगी तब स्टॉक खरीदेंगे. तो वो मूर्ख खरीद रहे हैं अभी, जब चिप आने लग गई और गाड़ियां बन के फैक्ट्री से बाहर आने लग गई और चार्ट हो गई पीक आउट. So we have to move out of strengths. We have to get into weaknesses with some methods. And there are still good number of stocks, individual stocks की पूरा सेक्टर एफएमसीजी ओवरसोल्ड ओवरबॉट है. एक बार 10% करेक्शन देगा. सीमेंट 10% करेक्शन दे सकता है. ओवरऑल मार्केट ने 10% करेक्शन दिया. इन लाइन विद मार्केट करेक्शन कर जाएंगे कुछ सेक्टर्स जो 30-30% बढ़ गए. पर ये वेंकीज जो बिल्कुल मेरी मर्जी स्टाइल में घूम रहा है और उसने एफएमसीजी के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं किया,
तो मार्केट में डिसेप्शन भी चलेगा। वो थायरो केयर जो बिल्कुल पड़ा है on a after summer afternoon, a very hot afternoon where your Labrador is hanging out its tongue and panting as if कि वो बहुत थक गया है, और उसको छेड़खानी करो उसके साथ, ऐसा झपट्टा मारेगा। देयर आर सो मेनी चार्ट्स राइट नाउ जो एक साथ झटका मार सकती है, या उनमें नीचे गिरने की और जगह खत्म है, बहुत ज्यादा कूट दिए गए। सो वी हैव बीन टिल्टिंग कैश एक्सपोजर ज्यादा करो, ट्रेडिंग का स्किल्स है, यू आर नॉट द सीएक्स ऑफ सम बैंगलोर बेस्ड आईटी फर्म और some financial institution or running multiple shops and showrooms, you are able to give adequate time to the market। 2-3 दिन का व्यू लो, छोटी ट्रेडिंग करो, 25%। वो टाइम गया कि 200% of your market exposure is happening on trading। No, trading has to become a fraction now, and only for those जो सारा दिन डब्बे में बैठ सकते हैं, छोटे सौदे कर सकते हैं, छोटे प्रॉफिट्स में काट के निकल सकते हैं। पूरा माहौल बड़ी मंदी का लग रहा है, 16,800 हो जाएगा, घूम गया ना बाजार 17,300 से ही। इतना जोर का गैप डाउन खुलेगा, एसजीएक्स निफ्टी को रात में ही कूट दिया है, एसएनपी खलास हो गई है, कल तो मंदी वालों की बल्ले बल्ले है। तो या तो पागलपन चाहिए, या वो स्टडी चाहिए, या वो मेंटल एडेप्टिविटी चाहिए जो हमने ट्विटर पे लिखा कि कल सवेरे जो भी गैप डाउन खुलेगा, मंदी काट कूट के वापस लेन मार देना, बहुत शार्प रैली आएगी, पास्ट वीक के ऊपर जाएगी। सो इफ एनीबडी कैन हैव दैट नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, if anyone can have respectful love for the market, that's the problem. Most people in life and also in markets are only chasing lust। मोहब्बत करना और इज्जत करना तो है ही नहीं बहुत से लोगों की समझ में। So if you have that respect for the market, you can suspend your judgments and you can very well follow the market। So problem is not कौन सी चार्ट की टेक्निक और कौन सी क्या, the technique is your enemy is inside you। बड़ा व्यू ले लेते हैं लोग, बड़ा व्यू का भी मार्केट नहीं है। तो कल को अगर बाजार बहुत जोर से पेल भी दिया गया, सपोज करो, जो रंगत बन रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई एंड पैटर्न्स आर नॉट वेरी वेरी रिजोनेंट पैटर्न्स। एक जैसे सोनोरस साउंड्स आर म्यूजिक, बट a lot of noise is noise। Market is not making music right now, market is full of noise, but within this noise we feel we keep on noticing stocks here and there in this sector or that sector or some entire sectors that are unpopular, पड़े हैं, कोई लाइमलाइट नहीं है। तो टीवी सुन के, टीवी पे एक्सपर्ट का ज्ञान सुन के, किसी की ट्वीट पढ़ के, किसी के टिप पे काम करोगे तो ये बाजार पैसा छीनेगा। और शांति से दिमाग लगाओगे, बहुत ज़्यादा चार्ट भी नहीं देखी भैया, ये 52 वीक के लो पे स्टॉक बहुत दिन से यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, घट नहीं रहा है, थोड़ा सा ले लो, ऐसे 10 स्टॉक्स को खोज के ले लो। डोंट गो आउटसाइड मोर देन टॉप 500 स्टॉक्स इन वॉल्यूम। उसमें से भी जो थोड़े सस्पिशियस क्वालिटी है या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अब अडानी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, किसी के नसीब में नहीं है वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट मैन की वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, वो एक अलग ही अपना भाग्य लिखवा के लाए, तो छोड़ दो उसको अगर उस पर फेथ नहीं आता है। बट दैट्स व्हाट आवर थीसिस इज, जो ओवरबॉट है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी हो गई, ऑटो ठोक के बैठे हम, मे बी वी आर कीपिंग ऑन ट्राइंग आवर हैंड, बार बार स्टॉप लॉस लगा के छोटे टेक प्रॉफिट्स करके लार्ज बैंक्स को हम बेचते हैं। छोटे बैंक्स को हाथ ही नहीं लगाना है, दे वर टोटली अनग्लैमरस। उनका टाइम 10 साल की यातना को भोगने के बाद आ गया है, और 10 साल तक लगातार वैल्यू डिस्ट्रक्शन करने के बाद, सी आई दिस मे नॉट बी ए गुड लॉजिक, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एंड आस्किंग गुड क्वेश्चंस फर्स्ट मे लीड टू गुड आंसर्स। ये कैनरा बैंक और ये बाकी के जो यूओबी, आईओबी, ये जो फेडरल बैंक, ये सारे बैंकों ने आज के 10 साल पहले अपना पीक बनाया और उसके बाद 90% गिर गए 10 साल में। लास्ट 10 साल में क्या हुआ, द होल वर्ल्ड वाज विटनेस टू कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। What was happening 10 years prior when they were making continuous rises? 5 साल में सारे stocks multi bagger हो गए, 4 bagger, 5 bagger। That was a time when interest rates were rising, and these stocks were really outperforming the glamorous banks of today। ये ICICI, SBI भले PSU के लेबल में आता है, it's one of the smartest banks। An SBI banker, if he chooses to leave that bank, is always picked up by other banks on a much larger premium। SBI is an RBI in itself, it's an institution in itself with a history of excellence for more than 100 years। SBI का ट्रेडर, ट्रेजरी का या कोई भी बैंकर, SBI is a different bank in a different league। So SBI is also like those glamorous banks only। तो इन सब का लास्ट 10 साल में बड़ा पैसा बना, बिकॉज रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम में इन सब के पास बिजनेस डेवलपमेंट की, रीच आउट की, एंड लोन बुक को एक्सपैंड करने की स्किल्स थी।
So in reducing interest rate regime, net interest margin will also reduce. In a net interest margin reducing business, जो lazy, slothful pigs of the banks were, वो साफ हो गए. अब क्या है कि आराम पसंद बैंकों के भी पैसे कमाने का टाइम आ गया. So the relative competitive advantage that these very sexy looking, very glamorous looking banks had, my personal thesis is that competitive advantage is going to wither. आईसीआईसीआई में और एसबीआई में पैसा जाम करके बैठने के बजाय जिगरा करके मेरे को आरबीएल लेने का है. हो सकता है 3 गुना 4 गुना हो जाए यहाँ से, पर नीचे से ऑलरेडी इतनी जोर से बढ़ गया झटके में. तो अब आप कूद के मत लेना. हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत दिनों तक शांति रखो, घबराओ नहीं, बेचना नहीं है. ये डिश टीवी भी सुभाष चंद्र का बिकेगा. एक झटके में कोई ने ऊपर खींच दिया, वापस 20% नीचे डाल सकता है. बट फॉर ए 5 bagger मूव, some, and you can guess who is the person who's going to buy it. He's from the north, running a very very powerful telecom communications empire, from one Marwadi to another. That's the best case guess कि ये शादी कैसे होगी. सुभाष चंद्र से तो नहीं चलेगी ये कंपनी, उसको बेच के जाना है. मैनेजमेंट चेंज, स्टॉक 10 साल के साइकिल के बॉटम पे है. एक बार बीच में 8 रुपए से 21 रुपए का स्पाइक दिया, वापस इतना नीचे आ गया, मेकिंग ऑलमोस्ट मैसिव रिट्रेसमेंट ऑफ ए लार्जर पैटर्न ऑफ ए 5 years. 60 रुपए का अगर आपको व्यू आता है कि वैल्यू भैया ये महीने का 200 रुपया कलेक्शन जो है ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसी छापा है. रोज का 6 रुपए का न्यूज़पेपर बिकेगा, न्यूज प्रिंट का पैसा 90 दिन की क्रेडिट पे देंगे. मैनेजमेंट अगर ऑनरेबल हो या ऑनरेबली कंडक्ट कर रहा है तो इस तरह के बिजनेस जीवन भर पैसा कमाते हैं. बहुत बड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग आ सकता है. हम तो खैर चार्ट पे बेस करते हैं, तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं. सो अनग्लैमरस पोर्टफोलियो बनाने के लिए इंसान को ईगोलेस होना पड़ता है. जजमेंटल नेचर विल रिड्यूस इफ वी बिकम लेस इगोइस्टिक. लेस इगोइस्टिक वी बिकम when we stop taking pride in our intellect. To excel, each person is required to suspend their intellect. I'm not saying intellect is of no value. The intelligent will suffer as as much as there is an understanding that the less than intelligent will suffer. Suffering is Pain is guaranteed to each person in this universe because pain is a signal to take action. But the intelligent shall suffer differently. The pain will come to all, but the intelligent will be able to choose not to suffer. They will be able to take action. The unintelligent will suffer. That's the only difference. दर्द तो सबको होगा, पर यातना झेलने का काम मूर्ख करेगा. So then what is the stage of getting so wise to be able to suspend your intellect? आप कितने इंटेलिजेंट हो, अपने लाइफ पार्टनर से बहस करते हो, एक पॉइंट के आगे चुप रहना बेटर है, इसका गुस्सा शांत होने दो. सो डू नॉट ट्राई टू जज मार्केट्स कॉन्स्टेंटली. 100 साल में जो मार्केट की हिस्ट्री और जो कंडेंस्ड विजडम है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता है. एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज व्हाट मेक्स सेंस. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स कि सबको खरीद भी नहीं पाओगे, जो मल्टी ईयर लोस पे या बिल्कुल डोल्ड्रम्स में इग्नोर्ड कंडीशन में पड़े हैं. तो उनमें अगर कोई वर्ल्ड में बड़ी घटना भी आ जाती है, सम कैलामिटस फर्दर इवेंट हैपेंस, the relative distance that they can fall is much lower. So you've cushioned your portfolios by tilting that way that upside beta can expand very heavily. कि बाकी ओवरऑल निफ्टी अगर यहाँ से 10% बढ़ के 20,000 हो जाएगी, तो ये वाले स्टॉक 40%, 50%, 70% बढ़ सकते हैं. पर निफ्टी फॉल्स 10%, these stocks may not fall more than 10, 15, 17%. But if Nifty falls 10%, a stock like Ashok Leyland can fall 35, 40%. बट अशोक लेलैंड इज राइट नाउ टाउटेड वेरी ग्लैमरस. और हमने जब 90 रुपए में झगड़ा कर करके दिलवाया, तो पता नहीं है खाली चार्ट पे ऐसे कैसे बोल सकता है. चार्ट खाली नहीं होती है, हमारा मन या दिमाग भरा हुआ होता है. सो टू सम इट अप, माय थीसिस इज this is a market that is going to play both sides. 1 week up, next week down, and then suddenly it may 1 week go down even more. But market is what? Index. To me, index is charas ganja of the market, of the masses. You make money on stocks, you lose money on stocks, and index is gambling entertainment. तीन पत्ती gambling entertainment होता है. खाली इंडेक्स की ट्रेडिंग करके किसी का वेल्थ नहीं बन सकता.
अगर खाली इंडेक्स की ट्रेडिंग करके वेल्थ नहीं बन सकता, तो हमारी लार्जर वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में हम इंडेक्स को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? व्हाई डू वी गेट सो इन्फ्लुएंस विद द इंडेक्स? सस्टेन्ड मूव 25-30% इंडेक्स गिरेगी, उस टाइम बहुत से स्टॉक 60-70% गिर जाएंगे. सो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल portfolio theory beta, how much fraction of the index movement would a stock do? Most stocks would have a beta of from 0.9 to 1.1 amongst the large cap blue chips. तो जो small caps को 2 beta stocks को बहुत dangerous लोग बोलते हैं. This beta also does not stay constant. Beta compressions happen over time. In the long run 10-year data के अंदर में beta आपको more or less constant मिलेगा. But short term betas keep changing. So the whole fun of market timing or stock selection, चाहे fundamentally कर लो, only way we can do unglamorous things in life, non-confirming things in life. Why do we socially confirm? अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बेटे की शादी में घोड़ी नहीं बुलवाई, घोड़ी तो बुलानी पड़ेगी, चाहे बारात गाड़ियों में ही जाएगी या फ्लाइट पकड़ेगी, घोड़ी तो बुलानी पड़ेगी. समाज क्या कहेगा? This conformism is what will happen to my identity. But there is an easy way. If you practice it for a few days, you will start feeling it. You make your duty towards protecting your capital paramount. कोई मुझे मूर्ख कहेगा, कोई मुझे समझदार कहेगा, भाड़ चूल्हे में जाए. नोट खत्म नहीं होंगे, नोट खराब नहीं होंगे, तो ही उसी में समझदारी है. So protect your cash, try to minimize the risk on the level of returns you are seeking. And if you constantly focus on capital, that it's a duty, it is not my capital, it is my family's capital. Whatever I'll do with this capital, I have to fulfill some purposes with it. Without that, ये standalone traders, institutional traders don't blow out. जीवन भर वो अपनी नौकरी को protect करके रखते हैं. And it's not that just because, most of the time Goldman Sachs trading room will hire batch toppers and that's why they don't lose money. No. बैच टॉपर्स जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर उतनी जल्दी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आएगा. इट इज द पर्सन हु थिंक्स ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, he stays humble. But then what happens that institutional traders seldom lose their job? The sense of duty to the employer's capital becomes so huge in their mind that they cannot afford the intellectual arrogance of being a gold medalist at the top 5 business schools in India or top 10 or whatever. But as individual investors and traders, we end up succumbing. How well networked I am. I'm able to solicit answers from these 10 very well known experts on Twitter. अब वो ट्विटर के ऊपर जो एक्सपर्ट है वो निक्कर पहन के घूमता है घर में, वो शॉर्ट्स पहनता है, वो लुंगी बांधता है, वो गमछे में घूमता है. या आपको वो कोई ऐसे एक्सपर्ट्स भी है जो शहर के बाहर रहते हैं पर ट्विटर पे बहुत बड़े ज्ञानी गुरु बने हुए हैं, बाबा बने हुए हैं. एंड दे मे बी एक्चुअली स्टेइंग इन अ मुफस्सिल एरिया, पेइंग अ रेंट ऑफ 7,000 a month, but talk a lot of gas on the Twitter. So do not allow these conformisms to work for you, not only for the market of the next 1 month, but conformism in life. आपने अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है वो अपने पड़ोसियों से पूछते हो. अड़ोस पड़ोस के अंदर आप लिहाज में रहते हो. Limit the interaction if people are trying to impose too much of judgmentalism on us. But we make our choices in life. The food we will have, the vacations we will have, the school we will send our kids to, the way we will treat our kids. The society committee does not decide. आपकी मोहल्ला कमेटी नहीं डिसाइड करती आप बच्चों की पॉकेट मनी क्या करोगे. And those parents who get over influenced by society, they end up creating a effervescence. वक्त से पहले adolescent kids का innocence चला जाता है, right? So same works for our investing. Why should we lose our innocence? Why should we live a life of feeling so burdened and anxious all the time? If you're feeling anxious and you're feeling burdened with investing, something is wrong with the way you are treating yourself and the way you are defining your work in markets. Your work in markets is not you. You have to remove yourself. Get out of your own way. That's what one good Western author wrote. But get out of your own way is what our Indian spirituality has been talking about for 1 lakh years.
We have to minimize the self. And the only way to minimize the self is make your duty paramount. And the only purpose to study things is to identify what approach, what method, what kind of work ethics should become your duty. गैंगस्टर बनने की भी तो एक ड्यूटी हो सकती है ना, लॉयल होना पड़ता है गैंगस्टर के साथ, नहीं तो ठोक देगा। भाई का आदेश है, छोकरे लोग जाएंगे रास्ते में कुछ भी कर देंगे, कानून को धर्म को सब कुछ भूल के वो मारकूट कर देंगे, छुरे चाकू चला देंगे। सो दे आर ऑल्सो लिविंग ए लाइफ ऑफ ड्यूटी, भाई की ड्यूटी कर रहे हैं। सो द होल कैच इन लाइफ इज not to get the know-how of the world, but to get to know what the self needs to minimize and what are your duties. So fix up what are my life goals. I have to save for daughter's marriage, I have to save for kids' college, I have to save for a new home, and then stick to that plan. And if you stick to what your goals are and constantly and update your goals, then nothing will sound glamorous or unglamorous to you. Nothing will sound a great idea. Everything will become like risk is always there, I have to constantly focus and monitor it. तो कहाँ पे कम रिस्क लेनी है इनसाइड द मार्केट, जो बहुत घट गया स्टॉक उसको स्टडी कीजिए कि भैया अभी अति के बाहर इसको अनरियलिस्टिक तरीके से घटा दिया। दीपक फर्टिलाइजर्स को ठोक दिया, उसकी आग लग गई, तो प्रमोटर की काबिलियत, उस कंपनी की फ्रेंचाइज, वो सारी चीज़ें आपके समझ में, इंश्योर्ड है, आगे पीछे आ जाएगा पैसा। जितने दिन का प्रोडक्शन लॉस हो रहा है और जितने दिन की प्रॉफिट्स की लॉस हो रही है, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके देखो, स्टॉक उससे बहुत ज़्यादा टूट गया। मेरे को लगता है दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा धीरज को रखेगा, 6 महीने में 50% की रिटर्न देगा। हो सकता है एक बार वापस रिट्रेस कर जाए, जो लो अभी रिसेंट बनाया था, 10% की डाउन साइड, 50% का अपसाइड। तो दिस स्पेसेस शुड नॉट बी ए प्लेस टू गिव specific stock advice, because every advice may not be suitable to every person, and just throwing stock names and potential percentages gross, these are examples. Each person, there is a suitability of a type of stock, how volatile a path it has ahead. So all I would say is hunt around, at least start looking at stocks from good managements, good companies that have had a massive correction and they are now just tottering here, घट नहीं रहे हैं। स्टॉक्स जिनका गिरना थम गया है और जिन स्टॉक्स का बढ़ना थम गया है, बहुत बड़ी रैली आ गई, बढ़ना थम गया, बेच दो ऑटो को। जिसका घटना थम गया है, 8 10 12 15 स्टॉक्स में डिवाइड करके थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, वॉलेटिलिटी विल गेट अब्सॉर्ब्ड। सो इफ इन केस द वर्ल्ड डज नॉट गो थ्रू अ डीप डाउन साइड और निफ्टी 20,000 हो गई 3 महीने में, मुझे लगता आएगा एक डाउन साइड, और वो आया नहीं आया, बोल दिया आएगा, मैं तो मेरा काट लूंगा, भाग जाऊंगा, अपने आप ट्रिगर हो जाएंगी चीजें। तो what I am doing and what I am asking my folks to do, कि जिधर बड़ा पैसा आ सकता है और घटने की चांस कम है, पोर्टफोलियो को उधर लोड करो और बचे हुए 25-30% एक्सपोजर से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करो। एंड यू नो दिस इज हाउ, इफ अ डाउन साइड कम्स, विच इज आई फील पहले आएगा, और हो सकता है अगले 8-10 दिन में आ जाए, एक बार 2 दिन की धुआंधार 3% की रैली कराने के बाद ऐसा पेल देंगे निफ्टी को, तो वो राधा कृष्ण जी दावानी की जो अरबों रुपए की लाइन है कि अक्सर शेयर बाजार में चवन्नी में भी माल मिलता है, पर जिस दिन चवन्नी में शेयर बाजार बिकता है उस दिन चवन्नी 2-4 के पास होती है, हम पहले इतना ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। तो सेफर स्टॉक्स में, स्टैटिस्टिकली सेफर स्टॉक्स में डालिए, थोड़ा कैश भी रखिए। ऐसा नहीं है कि कैश यूटिलाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा और एक तरफा बाजार भाग जाएगा, कोई ना कोई सेक्टर रोटेट होकर के अपना डीप करेक्शन खोजेगा। सो दीज आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू हैव सम कैश, मूव इनटू स्टैटिस्टिकली डिफेंसिव स्टॉक्स, and trading horizon, don't try to capture longs, that is getting captured through your defensive positioning of the portfolio, and trading attempts should be made rally आए बेचो, rally आए बेचो, so दोनों साइड का नगाड़ा बजाइए। That's what my recommend is, but each person must discuss with their investment advisor, do their own study. We do not have a fiduciary duty to you, and it's not a lip service to keep SEBI pleased. I truly mean it. Everything is not suitable for everyone. बाजार सबके लिए सेम है, पर सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है। So the you or the individual or the self that each is will require a unique surgical method to be minimized. You know, the advice that a suitable advice to each must be given is a limitation of Western way of expressing.
The शाश्वत वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज हर इंसान के अंदर एक यूनिक किस्म का पशु है. ईच पर्सन हैज टू बी मिनिमाइज्ड इन अ यूनिक वे. हर इंसान यूनिक तरीके से बीमार है. हर इंसान का अहंकार यूनिक है. भगवान ने किसी पर्पस से हम सबको यूनिक फिंगरप्रिंट, यूनिक रेटिना, यूनिक डेंचर, डेंटल इम्प्रिंट दिया है. So we all have a very unique set of vasanas or our bundle of karmas in our unconscious. And that's what interferes with the process of following the market. So good investment advisor who will get deep with you, study your unique compulsions, unique goals ahead. At least आपके unique goals को और unique compulsions को एक investment advisor professional level पर identify कर सकता है. And along with that, if you work on your own swadhyay, sit and delve upon yourselves, किस तरह की मूर्खताएं आप बड़े आसानी से कर देते हो, और उन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे नज़र रखो कि क्या वो भी वही मूर्खताएं कर रहा है, तो उसको आगाह कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है. और इफ़ यू आर योर ओन सेल्फ अपॉइंटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो इट्स नॉट जस्ट कि मार्केट का डायरेक्शन ले लिया और काम हो जाएगा. स्टॉक मार्केट तो सबके लिए सेम है और सबको ब्रॉडली पता है मार्केट क्या करेगा. कुछ बर्बाद हो जाते हैं, कुछ तैर जाते हैं, कुछ लोग 80% पॉपुलेशन हवा में गोते खाती रहती है, 18-19% बर्बाद हो जाते हैं, 1% लोग पैसे कमाते हैं. तो वो 1% कौन है जो बाजार के साथ चल पड़ते हैं, और वो इसलिए चल पड़ते हैं कि या तो उनके पास इतनी ताकत है कि उनको अहंकार की जरूरत नहीं, उनकी ताकत से उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, या उनके अंदर इतना बड़ा मनोबल है कि वो अपने अहंकार को आड़े नहीं आने देंगे. अहंकार इज योर सेल्फ परसेप्शन. So do study things. Don't go by anybody else's opinions, including mine, because your ego is very very unique. My ego is very very unique. I will have my own mechanisms of controlling the damaging effects of my own ego and get out of things when they are not working. But your ego will keep succumbing to, and it will only at most find frustration. Twitter पे आके कोई troll कर जाएगा, सुशील केडिया तूने 1.5 साल पहले बोला था ये होगा पर अभी वो नहीं हुआ. वो आके ये नहीं बोलेगा तुमने और 20 चीजें बोली थी उसमें से इतनी चीजें राइट हो गई. तो मैक्सिमम कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, पैसे तो लग जाएंगे. सो स्टडी योर ईगो, स्टडी द यूनिक idiosyncrasies each of us can do, so that you can minimize them and follow a process in the market. One good process for the current atmosphere that looks to me is go into deeply oversold stocks of good quality companies. For an example, Venky's could be one of them, and tilt your portfolio towards that. Short term trading on the short side, long the portfolio already है. That's all from my side. Rima, I've spoken at quite a length. 9-11 हो गए हैं. Maybe another 3-4 speakers or questions. Let's keep the discipline of winding up always in a timely and realistic way. Yes, but that was really nice. I mean, that was really insightful. I think we all were listening very patiently because it was really insightful and thoughtful and thought provoking to listen to that. And I think there were a lot of takeaways in that. So, a good thing that this is a recorded space and we can go back to that in case we have missed anything. So, yes, let's take up a couple more people who have been here with us, and probably then we can go around, winding up the session. So, I don't know if Mayank ji, Ghanshyam ji, and Devraj has spoken. So I think Mayank ji was here before. So Mayank ji, if you're around, please go ahead. Let us know your views on the market at the moment. Mayank ji, are you around? Okay, we'll circle back. Ghanshyam ji, are you around? Would you like to go ahead and let us know your views on the markets? Yes, ma'am. This is Devraj. Okay, go ahead, please. सर मैं इंडियन होटल के बारे में व्यू जानना चाहता था सर आपसे. नहीं जी, मेरे पास कोई व्यू नहीं है इस तरह की सभा में. और मेरा आपसे भी ये सुझाव है, अपने निजी जीवन के फैसले ट्रेन के सफर में किसी मुसाफिर से मिलके जब नहीं करते हो, तो अपने पैसों के बारे में फैसले ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिरों के साथ नहीं करने चाहिए. I will refrain from giving such impromptu advice without knowing who you are, what is suitable for you. The company is outstanding. There may be some minor correction in the stock, but I cannot recommend it to you. I hope that's a fair answer. Yeah, thank you, sir. मतलब इतनी देर तक मैंने स्ट्रेच किया
और आप अपने अहंकार को उस पर सर्जरी करने को रेडी नहीं हो। आप मार्केट के अहंकार को समझना चाहते हो, पहले खुद के अहंकार को समझो, अपनी कमजोरियों को, अपनी जरूरतों को समझो, अपनी मजबूरियों को समझो। आप और स्टॉक मार्केट दो जन की मिलकर के एक टीम बनती है। स्टॉक मार्केट नटराज की तरह है, करोड़ों लोग इस डांस फ्लोर पे रेन डांस कर रहे हैं और नटराज जो है ना वो दिव्य नृत्य कर रहा है। तो कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई डिस्को कर रहा है, कोई खड़े खड़े मुंह फुला के ठुन ठुन कर रहा है। पर दिव्य नृत्य ऐसा होता है नटराज का कि उसके अंदर में हर तरह के डांस के स्टेप्स उनके हर एक स्टेप में दिखते हैं और हर व्यक्ति को ये सुकून मिल जाता है, ये संतोष मिल जाता है कि मैं नटराज के साथ अकेले नाच रहा हूँ। तो आप, यही है स्टॉक मार्केट वास्तव में। ये करोड़ों लोग मिलकर के एक एक अब छोड़ो उस मैथ्स को, एक कांस्टेंट सा बन जाता है, पावरफुल कांस्टेंट। जो जो आप गूगल पे सर्च मारना एच कांस्टेंट एंड यू विल डिस्कवर अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट, विल क्रिएट अ डाइग्रेशन। सो स्टॉक मार्केट सबके लिए सेम है। अब आप भरतनाट्यम कर रहे हो, कुचिपुड़ी कर रहे हो, डिस्को कर रहे हो, भंगड़ा कर रहे हो, और वो ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको समझे बिना नाच लो, कूद लो डांस फ्लोर पे। सबने भांग पी हुई है नटराज के साथ नाचने में, या ऐसा लग रहा है कि बाकी के भी लोग बिना भांग वाले भांग पी के नाच रहे हैं, तो नाचने का मजा तो ले लोगे, हासिल क्या करोगे? नटराज के करीब पहुंचना, उस भीड़ में से सबको धक्का मुक्का दे के आगे जाना वेल्थ की रेस में, तो अपने आप को आपको स्टडी करना पड़ेगा। नटराज को क्या स्टडी हो? नटराज को कोई स्टडी नहीं कर सकता, उनकी तो भक्ति करनी पड़ेगी आपको। Everybody is obsessed about what is to be done with the market. Undoubtedly, you can't be ignorant about it कि this is नटराज, this is the stock market, ये ऐसे काम करता है। पर इस भीड़ में अगर आगे जाना है तो किसको आगे लेके जाना है? जिसको आगे लेके जाना है उसको स्टडी तो करो, पता तो करो वो किस किस तरह की बेवकूफियां बड़ी आसानी से कर देता है, और वो बेवकूफियां ना हो सके उसके सेफगार्ड्स बिल्ड करो, उसके सिस्टम्स बनाओ। एक सिस्टम ये भी हो सकता है कि आपका लार्जर बैंक अकाउंट वाइफ के साथ जॉइंटली हेल्ड हो, और सट्टा करने के अकाउंट में वाइफ जब तक साइन नहीं करेगी तो अगले 5 लाख नहीं आएंगे। सारे पैसे अपने अकाउंट में रखोगे तो उड़ा दोगे। दैट्स वन एग्जाम्पल, फनी एग्जाम्पल परहैप्स। सो फोकस ऑन दोज थिंग्स। ये स्टॉक, वो स्टॉक, मे बी योर क्वेश्चन इज इनोसेंट एंड यू जनरली वांट टू हैव अ व्यू। लॉट ऑफ पीपल डू गिव दैट व्यू, बट आई होप आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू बी इंटेलेक्चुअली एरोगेंट विद यू। बहुत कुछ खो करके थोड़ा कुछ ये सब कमाया है, और किसको पता कौन कितने समय तक इस धरती पे है। तो आई वांट टू शेयर व्हाट आई हैव विद मी, एंड दैट माइट एक्चुअली बी मोर यूजफुल फॉर यू। So anybody else would like to have a go? Basically, I think we don't give calls here, sell calls or buy calls because नहीं, वो कॉल्स कर सकते हो, पर क्या मतलब है उनका? हेलो, 100 रुपए में एक आदमी ने बेचा, सेम टाइम पे 100 रुपए में दूसरे आदमी ने खरीदा। बेचने वाले का स्टॉप लॉस है 102 रुपया, लेने वाले का स्टॉप लॉस है 98 रुपया। दुनिया के बाकी हर धंधे के अंदर अगर एक आदमी लेगा एक आदमी बेचेगा तो अंडरस्टैंडिंग कॉमन बात है ना कि एक आदमी का पैसा बनेगा, एक का जाएगा। नाउ वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। सेम टाइम पे दो लोगों ने उल्टा काम किया। पहले स्टॉक 102 का भाव हो गया, उसके थोड़ी देर बाद वो 98 हो गया। दोनों साफ, दोनों का लॉस लग गया। और ये भी हो सकता है कि स्टॉक 102 होने के पहले बंदे ने अपना सौदा काट लिया, जिसने जिसने लिया था 100 में, उसने 102 का प्राइस टच होने के पहले काट लिया, और और जिसने बेचा था उसने प्राइस का 98 टच होने के पहले 98.05 में काट लिया। तो खाली एक कॉल से कहानी आधी भी पूरी नहीं होती है। और मान लीजिए आपकी एक कॉल राइट भी हो गई और आपने राइट तरीके से एग्जीक्यूट भी कर दिया, फिर क्या करोगे? यहाँ तो रोज की कॉल है, जीवन एक चलती कहानी है। योर नेक्स्ट ट्रेड विल नेवर बी योर लास्ट ट्रेड। जीतोगे तो आके और जोर से ताकत से सौदा करोगे, खुद को हनुमान जी समझ के, और अगले सौदे में हार जाओगे तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सौदा करोगे, सौदा तो फिर से करोगे। तो इट्स अबाउट गेटिंग इनटू अ रिदम, इट्स अबाउट गेटिंग इनटू अ रिदम ऑफ नेट मेकिंग a good percentage of your trades as successful trades over a larger number of trades, and making and building a rhythm where you net make more money on your winning trades and you get out in small losses. एक कॉल राइट ले लिया तो क्या होगा? That's on which the whole stock market operations go from operators. अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े फंड मैनेजर और बड़े बड़े वेल्दी लोगों को मूड के रख देते वो,
आपको 9 टिप लगातार ऐसी आएगी कि आप एकदम भगत बन जाओगे। 10वें में इतना बड़ा आउटसाइज दांव खेल लोगे, रकम साफ, गाड़ी कोठी बाड़ी सब बिक जाएगी। तो कॉल लेना और देना कर सकते हो, पर इससे कहानी चौथाई भी नहीं, आधी भी नहीं है। मेरे को कोई स्टॉक सूट करेगा, आपको नहीं करेगा, क्योंकि आपकी टॉलरेंस क्या है, आप कितना जोखम बर्दाश्त कर सकते हो उसको जाने बिना मैंने आपको कोई बहुत वॉलेटाइल स्टॉक दिला दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस अप्रोच ऑफ गिविंग कॉल्स एंड टेकिंग कॉल्स, द एंड रिजल्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। कॉल देने वाला राइट और पेशेंट साफ। सो अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, बात करो तो पूरी करो, और आधे ज्ञान का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। तो आई वॉन्ट टू रिफ्रेन पीपल फ्रॉम डिस्कसिंग कॉल्स, broad market directions, big factors, asset classes, hints on what kind of stocks can work। क्योंकि कुछ लोग इतने अबोध होते हैं, अब ऐसे ऐसे डीपी भी लोग लगा लेते हैं ट्विटर पे, पता ही नहीं चलता उनकी उम्र क्या है। और कोई आदमी ने अपनी बहन बेटी की शादी के लिए रकम इकट्ठा कर रहा है और सो कॉल्ड किसी एक्सपर्ट को सुन के लगा दिया दांव, वो तो अपना बद्दुआ दे के निकल जाएगा। जब मेरी चित्रगुप्त से मुलाकात होगी मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, मेरे को पता ही नहीं मेरे हाथ से गुनाह हो गया। सो मेरी रिक्वेस्ट है, मार्केट क्या करेगा सिर्फ वो जानने की कोशिश करोगे तो 100% नुकसान होगा। 99% चांस नहीं है, 100% लॉस होगा। पर अगर मार्केट क्या करने वाला है ये जान नहीं भी पाए और इस चीज पे अच्छी पकड़ बना ली कि मैं क्या क्या मूर्खताएं कर सकता हूं और उनसे मैं करने से बचूंगा, तो आपके पास 70-80% चांस है कि आप पैसे बना लोगे। तो मार्केट क्या करेगा उसको स्टडी नहीं भी कर पाए तो यू हैव अ 50-50% चांस। बट इफ यू कुड अंडरस्टैंड by sitting down and noting your duties। बहुत से यंगस्टर्स होते हैं मोटा पैसा बना लेते हैं ट्रेडिंग करके, और एक दिन में फिर दुकान साफ, और उसके बाद क्या दिमाग बादलों पे चला जाता है। मैंने 10 लाख रुपए की रकम से काम शुरू किया था, 2 करोड़ का प्रॉफिट देख लिया, अब मैं वापस 5 लाख के प्रॉफिट पे आया हूँ, 2 करोड़ छोड़े हुए वापस 6 करोड़ और बना लूंगा। वो रकम घट के 10 लाख से 5 लाख बची है। एक महीने का ये गेम है, 2 महीने के अंदर भी ऐसे कांड होते हैं लोगों के साथ। मेरी जिंदगी की शुरुआत वैसी हुई थी, घर में किसी को भी बताए बिना कॉलेज के दिन में कर लिया सट्टा और बन गए पैसे उस जमाने के 30,000 रुपए। अपने आप को हनुमान जी समझने लग गया, अगले महीने वो 30 भी चले गए और घर से 30 लग गए। हनुमान चालीसा जब जब के परेशान, नाना को पता चल जाएगा तो जूत मारेगा, दादू को पता चल गया तो कान मरोड़ देगा, बापू तो घर से निकाल देगा, क्या करूं। तो ठीक है, संभल गया मैं, संभाल लिया लोगों ने। पर अब आपके सर पे अगर जिम्मेदारियां हैं, यू आर नो लॉन्गर एन एडोलेसेंट, यू आर नो लॉन्गर ए टीनेजर, आपने शादी कर लिया, आपके बच्चे हैं, आपको अपने घर में बहन है, तो ये मतलब ये गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है। मार्केट पूरा नहीं भी समझ आया तो मार्केट किसी न किसी तरह से किसी भी फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आपको दे देगा। आप क्या बेवकूफियां कर सकते हो उसको सबसे पहले मास्टर करो, और बहुत छोटे छोटे सौदे करो, और दूसरों की टिप पे और दूसरों की आइडिया पे काम कर लोगे। वो मैं समझा समझा के थक गया। लोग सोचते हैं मेरे को कहीं से पेड रिसर्च मिल जाए, फोकट की टिप मिल जाए, मैं कहीं से सुन के कमा लूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट आपके लिए कमा के आपको देने के लिए तैयार है, आपको उसको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लक्ष्मी जी तो चंचला है, वो घूम रही है दरवाजे दरवाजे पे दिवाली की रात को, जो मिल जाएगा उसके माथे पे टीका लगा देगी। पर अगर आपको भलक आ जाए कि लक्ष्मी जी कब आने वाली, उस वक्त आप बाथरूम में जाके साबुन से मुंह मत धोना कि लक्ष्मी माता आ रही है, मेरा चेहरा धोया हुआ रहेगा तो गहरा टीका लगेगा। तो समझदारी लाओ अपने आप के बारे में, उसके बिना कितना ही बाजार को समझ लो, बाजार आपके पैसे छीन लेगा। Until you understand the embedded idiot within you, market is designed to snatch your money। It's a humble request, please, because the way I speak with aggression, kindly don't take it as any kind of aggression। स्टडी करो अपने आप को, और अपने आप को स्टडी करने का सबसे आसान रास्ता अपनी जिम्मेदारियों को देखो। तो बात में डाइग्रेस हो गया था। यंगस्टर बहुत पैसे बना लिए, अब शादी हो चुकी है, बच्चा भी हो गया है, बहुत ज्यादा पैसे बना लोगे तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें बहुत बड़ी शाबाशी दे देगा? जरूरतें जितनी उनको तो पूरा कर रहे हो, आने वाले समय में और सेविंग्स करोगे, ठीक है, बन रहे पैसे बना लो। जब तक तुम बड़े पैसे बना भी रहे हो, हाँ बहुत स्मार्ट है मेरा जमाई, बहुत केपेबल है, देखो मैंने सही घर में रिश्ता किया था, देखो मेरी बेटी के कितने अच्छे दिन आ गए, और जिस दिन पेले जाओगे ना बाजार में, फिर क्या बोलेगा आपका ससुराल, पड़ोसी क्या बोलेंगे,
वही डर हमें सताता है ना, दैट ईगो बिकम्स बिग। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या बोलेगी। तो उस तरह की परिस्थिति में जाने का ही नहीं ना, उतने बड़े सौदे नहीं करने का। कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन स्टडिंग एवरी पॉसिबल क्वेश्चन in your personal silence that makes you sensitive to the feedback of the world. That is what is becoming conscious of your ego, and then decide I will never take these actions because they will make me hypersensitive to the feedback around me. That same attitude will also help you choose. Some people say sir trading करनी चाहिए कि investing करनी चाहिए, मतलब आपको घी लगा के रोटी पे खाना चाहिए या आपको लुखी रोटी खानी चाहिए, उसके लिए तो आपके इंटेस्टाइन्स में कितनी एसिडिटी क्रिएट होती है उसका अंडरस्टैंडिंग लिए बिना कोई आपको कैसे रिकमेंड करेगा। सो सेंसिटिविटी टू फीडबैक इज व्हाट ईगो इज। दोज हु आर हाइपर सेंसिटिव टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फीडबैक। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें पीछे से बॉस खड़े होकर बोलेगा शाबाश शाबाश वंडरफुल ग्रेट, तूने गड़बड़ कर दी, अरे यार ये क्या कर दिया। टेस्ट मैच क्रिकेट का खेलने वाला या जो T20 मैच खेलने वाला प्लेयर होता है, दैट सुपर नॉर्मल एक्सीलेंस दैट दे प्रोड्यूस। क्रिकेट तो बहुत लोग अच्छा खेलते हैं, पर वहां तक का इंड्योरेंस की आप इंटरनेशनल लेवल पे टीम को रिप्रेजेंट करो, 1 लाख लोगों के भरे हुए स्टेडियम में वो जो रोर उठता है उस रोर के प्रति इंसेंसिटिव होकर अगली बॉल पे जो आदमी फोकस कर सकता है वो एक्सीलेंट है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कितनी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आपने कितनी बढ़िया टिप ले ली, कितनी आपने इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी बैलेंस शीट एनालिसिस सीख ली। ये स्टेडियम में जो होता है ना रोड़ा, और उस रोड़े के ऊपर में जब आपके भीतर गोले फटने लगते हैं तो आप लड़खड़ा जाओगे और गलत जगह पे आप बैट घुमा दोगे। रॉन्ग टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट फायर हो जाएगा, रॉन्ग टाइम पे ट्रेड फायर हो जाएगा। सो कितनी आप किताबें पढ़ लो हाउ टू प्ले गुड क्रिकेट, कितने आप बढ़िया कोच के पास चले जाओ, कितना ही आप अपने हीरो को टीवी पे उसकी स्टाइल को कॉपी कर लो, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे to be insensitive towards everything except what your duty is. The duty of a batsman is to hit the next ball in the best possible way. वो ये नहीं सोचता है कि मेरे नाक पे से भी पसीने की बूंद टपकने ही वाली है और मेरे नॉस्ट्रिल्स के एकदम पास में पसीने की बूंद अंदर घुस जाएगी, जो बॉल आ रही है उसको मारता है, बाद में नाक पहुंचता है। सो you have to work first on getting focused on your duty, and you can get focused only when you know what your duty is. मार्केट को भी जानिए, और बहुत ज्यादा इन बातों को पूछने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको भेद दे रहा हूं, भेद। द सीक्रेट ऑफ एक्सीलेंस इज टू, यही हमारा धर्म है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट ड्यूटी फॉर यू and then make a checklist of never doing anything that deviates you from your duty, you will be a happy, healthy, successful man who would also be loved by God. Maybe I am sounding like a sadhu baba, but स्टॉक मार्केट में जितनी जल्दी इंसान भूत बनता है दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं बनता। तो चॉइस इज योर्स, या भूत प्रेत बन जाओ, भटकती आत्मा, या आप यहाँ पर एक इवॉल्व्ड सोल बन जाओ। सो यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। खाली स्टॉक्स मत पूछा करो, किसी को भी मत पूछो, अपने आप समझ में आने लगेगा। आई होप दैट मेक्स सेंस एंड आई एम नॉट goading you to be like me. You can always be your own success, but if I must give any advice, this is the most valuable advice, this is the truth as I understand it. रोज ये नए स्टॉक्स बदलते रहेंगे। 100 में आपने ले लिया, मैंने बेच दिया, दोनों मुनाफा कमा के निकल जाएंगे, दोनों लॉस करके निकल जाएंगे। तो क्या मतलब है खाली स्टॉक की बात करने का। Rima, it's risky. If you give me the mic, then I forget what the time is. So I'm not speaking any longer. You wrap up with any more pending requests. We perhaps have 3 minutes. तीन एक दो लोगों को अगर आप ले सकते हो तो ले लो। मुझे माइक मत दिया करो आप, मैं सेम बातों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि बात जो है मेरे को जो सच लगती हो तो एक दो ही होगी, 50 बातें तो होंगी नहीं सच्ची। रोज रोज नया सच तो सामने आएगा नहीं। Okay, so let's just see if anybody else wants to Ma'am, can I ask a question? Okay. Mahank is here. Maybe he can be our last speaker. We have 2 minutes. Or even Nitin. Let them be two.
बाकी लोगों को जिनको हम ऊपर नहीं इनवाइट किए, प्लीज डू नॉट माइंड, विल रैप अप इन अ टाइमली वे, फिर किसी स्पेस पे हम बात करेंगे। थैंक यू केडिया जी, नितिन दिस साइड। काफी समय से आपका स्पेस सुन रहा था, और जो सवाल मन में आ रहे थे उसके साथ साथ बिना पूछे ही आप आंसर दिए जा रहे थे, तो आई लेफ्ट विद वेरी वेरी फ्यू क्वेश्चंस। एक सवाल अपने लिए पूछना चाहता हूँ। सर, ट्रेडिंग करता हूँ, नॉट रेगुलरली, जब जॉब वगैरह के साथ समय मिलता है तब। रिसर्च भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पैसा बनता भी है, जाता भी है, सब कुछ होता है। एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाता, ये मन में रहता है कि द एग्जीक्यूशन पार्ट इज मिसिंग आफ्टर डूइंग एवरी, maybe this is driven by some kind of a fear of losing money, or I don't know, but execution part trading में weak रहता है। उस पे कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उस बारे में थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा गाइड कर पाए। थैंक यू। Sushil ji, are you here? Did you get the point? I thought I was already talking about all that only, no? Maybe he didn't hear it. आप रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। ट्रेडिंग क्या, लाइफ के अंदर हर एक इंप्रूवमेंट का एक ही सीक्रेट है। अपने दायित्व को समझो, अपनी कामनाओं के पीछे मत भागो। आपको बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, बहुत सारी वासनाएं आएंगी। यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिजायर्स। You will want to go and buy that new swanky car or an iPhone watch because your office colleagues have been doing it. But your duties, your family is different. तो आप पूरी रिकॉर्डिंग को वापस सुनिएगा। आई थिंक आई हैव मोर देन इलेबोरेटली स्पोकन अबाउट इट, ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। अपने आप को खत्म कर दो। जिस इंसान ने अपने अहंकार को छोटा कर दिया, उसकी प्रॉब्लम्स उतनी छोटी हो जाएगी। जिस इंसान का ईगो, उसका सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा बड़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी है। जो झुकने को तैयार है, उसकी समस्याएं छोटी हो जाएगी। तो अपनी ईगो को मिटाने का एक ही तरीका है, अपनी ड्यूटीज पे फोकस करो। और जिस इंसान की लाइफ में ड्यूटीज के ऊपर फोकस होता है ना, जिन परिवारों में दायित्व पर फोकस होता है, वो परिवार बड़े शांत और सुखी होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वेगरीज कम, प्रकृति ने कोई कुपात भी कर दिया तो भी वो परिवार बाकी लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं। कॉमन सेंस से ज्यादा बड़ा कोई सेंस नहीं है। किसी भी तरह की साइंस पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, क्वांट फाइनेंस सीख लो, सारे सेंसेस मिल के कॉमन सेंस बनते हैं। सो नेवर गेट सो स्वेड बाय एनी वन सेंस that it comes at the expense of common sense. And common sense is the one man who upholds his duty, he'll surpass all limits of happiness. And anybody who deviates from duty, he'll never be happy. And only the happy will attract all good things of life. You never get happy by making money, but because you have a happy, healthy, balanced life, good things come to you. तो आप प्लीज उस रिकॉर्डिंग को वापस सुनिएगा। पूरी रामायण खत्म होने के बाद आप मंडप में पधारे हैं, और इसलिए आप पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था। हमने पहले ही बता दिया, सीता किसी का बाप नहीं था। तो प्लीज सुनिएगा रिकॉर्डिंग को। ओवर टू यू रीमा, आई हैव ऑलरेडी शॉर्ट अप द टाइम। Okay, I think Mayank, if Mayank ji is here, we'll So hear don't from. direct any answers towards me, क्योंकि मैं एक बार जब फ्लो में आ जाता हूँ ना, तो मेरे थॉट ट्रेन के अंदर कोई ब्रेक Then नहीं है। nobody is complaining, no? I mean, Yeah, but that's not the good thing to do. Any it's okay. It all depends चलो on wrap the up। value. Like we are getting a lot of value out of it. I think that's why we No, the are. risk, Rima, is that in any space that you are around, my ego ends up bloating. मेरा अगले दिन नुकसान लग जाता है। Okay, we'll just take a last speaker. I guess a lot of people have requested, but I think we'll have to take you guys the next time in the next session. So, Mayank ji, अगर आप हो तो please put forward your views, and then we'll go towards wrapping up. Over to you, Mayank ji. Mayank ji, I can see you. You're unmuted, but आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो can you um try to talk? Okay, there seems to be some issues. So, what should we do? Should we take anybody else, or should we just wrap up the session? Let maybe Lata ji do a wrap up. Sure, sure. See, we would love to hear so many other people, पर रात के 11-12 बजे तक जगना, गपशप मारना, ये असुरी प्रवृत्तियां हैं। Let's not be demons. Let's respect the night. So Lata ji, please sum up and let's then say goodbye.
Thank you so much. I'm really honored to get this summing up duty.